Hello students, this is the first video lecture of chapter 14 Motion and Time, class 7th Science. Okay, so in this video lecture we are going to discuss about, as I said, motion and time. Now if you recall, in class 6th you have studied the chapter named Measurement and Motion. Okay, so in this chapter we would be starting with the revision of the concept known as measurement. Then we would be moving towards motion. Before moving towards motion, we would be first discussing about time. How can we measure time? So in fact the chapter name should be time and motion, because they would be first addressing you how to measure time, and in earlier days how the time was measured, now how the techniques are used to measure time. Okay, that we would be discussing, and then we would be moving down what is motion. And motion basically what is movement, to move. And to move, if we consider the measurement, that is speed. भाई कितने speed से चल रहे हो, slow चल रहे हो, fast चल रहे हो, गाड़ी slow चलाओ, गाड़ी fast चलाओ, है ना? ऐसा तो कोई नहीं बोलता गाड़ी fast चलाओ, but the thing is to measure the speed. Okay, so the optimum speed for driving a two-wheeler is 40 किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर ये क्या है, यूनिट है स्पीड का. कैसे आया? So that we would be discussing in the concept of motion. Okay, so before moving to motion we would be talking about time, and before time, okay, before how we can measure time, let's start with measurements. Okay, what are measurements? Okay, how can we define a measurement, which you have already been studied in class 6th. So what is measurement? Comparison of unknown quantity with some fixed quantity of same kind. Okay, so for example, you have been provided many examples for the explanation of this statement. If you recall, in class 6th they asked you to take a string. Suppose you want to measure the length of this string. Okay, so what you would be doing, you would be simply taking a scale. Okay, to measure the length of the string you would be taking scale instead of taking a weighing machine, because you want to measure length. If I ask you that I won't be giving you scale to measure string, but you take the weighing scale. मैं बोलती हूँ तुम weighing scale लो जिसपे वजन करते हैं, वजन कांटा लो और उससे you measure the length of the string. Will it be possible? No. So they are saying कि मैं एक ये जो है, ये length जो है string की, that is unknown for me, and the length of the scale, that is known to me, and that is fixed. So that is fixed quantity, and the unknown quantity is the length of the string, and it is of same kind. If I want to measure the length, then I shall be using the scale which is used for the same purpose. The thing I want to address you here is, for measuring the length of string you won't be using weighing scale. Okay, so I think the basic concept regarding this and how can we define measurement is clear to you. Without wasting much time, I would now talk about what all things we can measure. What are the quantities in which we can measure? So we can measure certain things in form of length. For example, mostly while measuring the length of the cloth, okay, or anything while measuring the length of the wall, okay, for perimeter and for calculation of area for building or construction of house, okay, etc, etc. If we talk about volume, in day-to-day life, okay, if you recall, daily in the morning you receive milk from your milkman, so called milkman. So दूध वाला आता है and he provides you what? He provides you milk in the desired amount in which you have asked him to give. Okay, if you have asked him to give 1 liter, he would accordingly weigh 1 liter in the form of volume and would provide you the milk. Okay, suppose today you are having guests at your home, so you would be asking your milkman, okay, to
give a double amount of milk than usual. So he would be, measuring 2 liter and then he would be providing you. The thing is, for measuring milk or liquid substance or gases, we use volume. Apart from this, mass, weight. Okay, when you suppose you go to vegetable market or fruit market for buying something, okay, vegetables or fruits, okay, wherein you would be seeing that the shopkeeper, according to weight, asks you for the money. Okay, कि 1 किलो लिया तो ठीक है 20 रुपए हुआ इसका, that kind of thing, that is mass. In case if we talk about time, so measurement of time, है ना, तो टेक्स्ट बुक में एक अच्छा सा एग्जांपल दिया, क्या कि तुम टाइम देखते हो इसलिए स्कूल पे टाइम, मतलब तुम्हें टाइम मेजर करना आता है, टाइम देखना आता है, इसलिए तुम स्कूल टाइम पे पहुंच पाते हो, है ना. द थिंग इज time is very 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 necessary, and therefore there are many, you have been asked to write essays on time management, and if you observe around you, around social medias, videos and clips, you would be, from hundreds, one would be video regarding time management, how you can consume your time in very positive things, in doing positive things which you will ultimately lead you to success wala path. So this is because you are able to frame the time of your life perfectly. Okay, so to measure time is very important. If we talk about temperature, okay, so if you have fever, okay, so doctor is using thermometer to measure the temperature of your body. Okay, so therein we require the this quantity to be measured. Okay, apart from the speed, so in motion we would be discussing about speed in detail. Okay, and now in the next, after completing with introduction and units, we would be starting measuring with time. So in this chapter we would be focusing on these two physical quantities. Yes, you heard perfectly, that is the quantities, these were the quantities, length, volume, mass, time, temperature, speed, etc., etc. are the quantities. These quantities can be measured. So the quantities that can be measured are referred as physical quantities, Okay, next topic is standard units. That too you are also aware that standard units, why there is a need of standard units. So first of all, let us understand this, that earlier days when there were no meter scale, or there were no inch tapes, so people used to use arm or footstep or handspun, and these things you have already studied in class 6th, how to measure the length or how to measure the distance. So different methods were used to measure the length. Okay, these are basically for measuring length. So earlier days length was measured like this, but these methods are unreliable. इस पे हम पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते कि ठीक है चलो आर्म पिट से करेंगे तो हर बार सही हो, ऐसा नहीं है. क्यों? आर्म, हर एक इंसान का आर्म का लेंथ ही अलग है. तो तुम अगर मेजर करते हो एक क्लॉथ को, तो तुम्हारा वो 3 आर्म्स के बराबर है. बट व्हेन यू आस्क योर टेलर वाला मैन टू कट अलोंग द 3 आर्म वाला लेंथ, सो ही वुड बी कंफ्यूज्ड. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ठीक है, तुम खुद से मेजर करते हो तो वो क्लॉथ 3 आर्म्स है, बट जब आपका वो जो जिसको आप स्टिचिंग के लिए दे रहे हो वो जब मेजर करता है तो उसके लिए शायद 2 आर्म है. ठीक है, तो द थिंग इज people to people or person to person, okay, the length of these would be changed. ये एक स्टैंडर्ड नहीं है, हमें कुछ ऐसा यूज करना है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, आप उस पर कंप्लीटली रिलायबल हो सकते हो. ठीक है, वो फ्लक्चुएट ना करता है, तो दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट. सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स यूनिफॉर्मली यूज्ड बाय एवरीवन is referred as standard units. ठीक है, these are referred as standard units. Okay, so SI system, okay, SI system in in 1960, you remember this,
in 1960 there was a conference of weights and measures. Okay, in that they recommended to use SI system. This is one of the system for measurement, and this is used overall the world. Okay, overall world. Okay, everywhere this system has to be used. Okay, it was recommended, not made compulsions, but for scientific measures. ठीक है, देखो एक्यूरेसी क्या होता है कि मान लो कि अगर तुम खाना पका रहे हो और खाना पकाने वक्त अगर तुम्हें नमक डालना है तो तुम अंदाजे से डाल सकते हो. मम्मी अंदाजा लगा के डालती कि भाई बेटा एक आधी चम्मच डाल दो. ठीक है, वहां पे अगर थोड़ी बहुत गलती हुई तो इट्स ओके, बट इन केस इफ यू आर डूइंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और are involved in any scientific work, उधर अगर थोड़ा भी मिलीग्राम का भी चेंज हुआ तो पूरा एक्सपेरिमेंट won't give you the expected results. जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा. So the thing is कि जैसे साइंटिफिक वर्क्स है जहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए, जहाँ पे अंदाजा वाला एस्टिमेशन वर्क वाला नहीं चलेगा, वहाँ पे this standard units are very much important. And this can be used worldwide. Okay, so SI system is full form is Système International d'Units. So this is nothing but in French SI system is Système International d'Units. Okay, so this system includes these standard units, that is meter. What do you think how meter is represented as? It is represented as small m. Okay, and it is for which physical quantity? Yes, you are correct, it is for length. Okay, when I talk about kilogram, how is it represented as? Kg, and is used for which physical quantity? Mass. Okay, next second is represented as small s and is used as unit for time. Similarly, Kelvin, capital K, is used for physical quantity known as temperature. Okay, but most commonly to measure temperature we use degree Celsius. The symbol is like this. You would write degree Celsius or degree centigrade. Okay, so commonly used unit to measure temperature is degree Celsius or degree centigrade, but the SI system says that for the standard unit for measuring temperature is Kelvin. For the standard unit for measuring time is second, for measuring mass is kilogram, and for measuring length is meter. But apart from SI system, there are different systems like FPS system, CGS system, and MKS system. What is FPS system? It is foot, pound, second. So foot is for length. So still now people are using this system for measuring the different quantities. Pound is for weight or mass, you can say, and second is for time. Similarly, CGS system, that is centimeter, again length. Okay, gram, that is mass, physical quantity, and second. Similarly, meter, kilogram, second. If you observe, this meter, kilogram, second is the same as in SI system, meter, kilogram, second. So MKS system is same as that for SI system. But SI system, apart from meter, kilogram, second, and Kelvin, is also specifying units for electric current. So unit for electric current, although it is not mentioned in your textbook, but you should be aware that unit of electric current is ampere and is represented by either AMP or capital A, ampere. And there is unit of brightness of light also. Light kitni bright hai, light kitni dim hai, ठीक है, that is also you can measure, and its unit is small c, small d, that is nothing but candela. Candela. Okay, so this is about the extra information. If you like to remember, you can, or else we move down to next, that is measurement of time. Till now what we discussed was regarding basic information of measurement,
and standard units. Okay, so this I think you are already being aware of. Now we would be starting with measurement of time. So what do you think? The SI unit of time is, we just now studied about SI system. So SI system, recommended which unit for time? So it was second and is represented with small s. Okay. Now, you can accurately measure the length and mass very easily. If you want to measure accurate length कि भाई इसकी exact length क्या होगी या इसका exact mass क्या होगा, you can measure very easily. But in case if I ask you to measure time accurately, 1 millisecond भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ऐसा measure करके बताओ time, so it would be difficult. For earlier days it was very difficult. Now it has become easy, but in comparatively in earlier days measuring length and mass accurately was easy comparatively to time. There was less accuracy. The exact time was very difficult. So time we can measure with the help of a device which works on this principle. कि भाई ऐसा principle हो क्या कि anything that occurs or appears at regular intervals can help us to measure time. अगर मुझे टाइम को मेजर करना है, ठीक है, तो वो टाइम को मेजर करने के लिए मुझे ऐसा डिवाइस या कुछ ऐसा चाहिए जो रेगुलर होता हो, बार बार होता हो. तो ऐसा कुछ प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए people used in earlier days, people used planets and stars to measure the time. How? So we know that Earth takes how much time to complete one rotation on its axis? Question is, how much time do Earth take to complete one rotation on its axis? So probably you are saying 24 hours and it is correct. Okay, so it takes 1 day for the Earth to complete its one complete rotation on its axis. Yes, you are correct. But what was the earliest method? Earliest method, to measure time, okay, was with the help of position of sun. So by seeing the position of sun in the sky, people used to make assumption, yes, कि अब 12 बजे होंगे. अगर धूप ऊपर है, मतलब सन एकदम ऊपर है, ठीक है, तुम्हारे सर के तुरंत ऊपर, दैट मीन्स अब 12 बजे होंगे. अगर तुम्हारे दिस साइड, दैट इज, मैं अपना साइड बोल रही हूँ, तो वो होगा मेरा लेफ्ट साइड, ठीक है. अगर तुम्हारे साइड से देखें तो इट इज राइट साइड. तो अगर सन राइट साइड जाता है तो फिर वो सनसेट हो रहा है, मतलब 12 बजे के बाद 1-2 बजे. बाय ऑब्जर्विंग द पोजीशन ऑफ सन, दे आर अज्यूमिंग द टाइम, ठीक है. तो इस तरह से टाइम देखा जाता था. और अगर मान लो पता लगाना हो कि एक दिन खत्म हुआ कि नहीं, तो इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ वन सनराइज एंड द नेक्स्ट, कि आज सन उगा, कल देखा तो फिर से सनराइज हुआ. तो दैट द पीरियड बिटवीन वन सनराइज टू अनदर सनराइज इज 1 डे. सिमिलरली वन न्यू मून एंड नेक्स्ट, ठीक है. तो वन न्यू मून मतलब नया मून नहीं, बट नो मून, है ना. सो नो मून मतलब उस दिन मून नहीं आई, है ना. तो मून नहीं आया तो वो क्या होगा कि आज मून नहीं आया, ठीक है. अब फिर वो धीरे धीरे मून दिखना स्टार्ट होता है, फिर फुल मून आता है. फुल मून के बाद तुरंत क्या आता है, न्यू. फिर वो कम होता है ना, ऐसा होता है ना कि न्यू मून होता है, फिर धीरे धीरे मून आता है, फुल मून होता है, फिर कम होता है, फिर वापस न्यू मून आता है. तो एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक का 1 मंथ का एक वो होता है ना, साइकिल, ठीक है. सो दैट इज हाउ दे मेजर 1 डे 1 मंथ. And 1 year can be measured by the time taken by the earth to make 1 revolution around the sun, ठीक है. तो अगर एक रिवॉल्यूशन हो गया सन के अराउंड, दैट मीन्स 1 year is complete. So this is by how by the position of seeing planets, natural satellite and stars, people made assumptions regarding time. But what if you want to measure accurate time? So for this, people started using different equipments in those days to make time measurement more accurate. हालांकि इतना एक्यूरेसी नहीं आया, लेकिन कोशिश किया कि इससे तो ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है. जैसे सैंड क्लॉक्स,
सैंड क्लॉक्स विच वर यूज्ड बाय रोमन्स। तो रोमन्स क्या करते थे, वो तुमने ऐसा कुछ देखा है, ऐसा कुछ होता है ना। तो जब तक सैंड अपर चैम्बर से नीचे चैम्बर में नहीं आ जाती, ठीक है, दैट इज ये सैंड, सारी की सारी सैंड अपर चैम्बर से नीचे इस चैम्बर में आने में जितना टाइम लगाती है वो उनके लिए एक यूनिट बन जाता था। मान लो इनके लिए भाई ये एक टाइम था। इस तरह से वो सैंड क्लॉक को यूज करते थे फॉर मेजरिंग टाइम। अपार्ट फ्रॉम दिस सन डायल, ठीक है। सो सन डायल का प्रिंसिपल क्या था कि वो पोजीशन ऑफ, देखो ना, सन डायल दैट मींस सन का पोजीशन यूज करके दे यूज टू मेजर टाइम, ठीक है। तो वो कैसे होता था कि एक ऑब्जेक्ट रखते थे और एक ऑब्जेक्ट पे सन, ऐसा ऑब्जेक्ट रखते थे जिसपे सन, मतलब अगर सन यहाँ से राइज हो रहा है, सन यहाँ पे सेट हो रहा है, तो सन की सारी रेस उस ऑब्जेक्ट पे आनी चाहिए। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से सन राइज हुआ तो इसकी जो रेस आ रही है इसका शेडो यहाँ बनेगा, ये शेडो यहाँ बन रहा है, मतलब जो पीपल है जिन्होंने सन डायल यूज करने के लिए रखा है, तो उन्हें ऐसा लगेगा यहाँ शेडो बन रहा है मतलब सुबह है। फिर सन जब ऐसे आएगा तो शेडो कहाँ बनेगा, छोटा हो जाएगा। सो द लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ द सन, ठीक है, द लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ द शेडो, कि भाई शेडो इधर है, अगर सन इधर होगा तो शेडो इधर बनेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अगर सन इधर है तो पोजीशन ऑफ शेडो इधर होगा, छोटा शेडो होगा, लंबा शेडो होगा। तो पोजीशन एंड द लेंथ ऑफ द शेडो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सन इज द प्रिंसिपल विच सन डायल यूज। And observing the position and length of shadow, people used to assume the time for that particular period कि भाई अब कितना टाइम हो सकता है, ठीक है। हालांकि इसमें एक्यूरेसी नहीं थी। जैसे बहुत सारे ह्यूज सनडायल्स वर मेड बाय महाराजा जय सिंह टू, who was of Jaipur, and he made huge sundials which you can see in जंतर मंतर in Delhi, okay, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, ठीक है। तो जंतर मंतर, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन द स्पेलिंग प्लीज टू चेक द स्पेलिंग। तो जंतर मंतर जो है, ओके, यू कैन फाउंड ह्यूज सनडायल्स व्हिच वर मेड बाय हिम। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज लार्जेस्ट सनडायल इन जयपुर, ओके, उसका एक्यूरेसी 2 सेकेंड्स तक जाता है, 2 सेकेंड्स तक उसका एक्यूरेसी जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सनडायल? Sundial cannot be used after sunset। सही है ना। अगर सनसेट हो जाएगा मतलब सन ही नहीं है, तो सन ही नहीं है तो फिर शेडो नहीं बनेगा वो ऑब्जेक्ट का, तो उसका पोजीशन और लेंथ कैसे देखोगे। सो सनसेट के बाद यू कैन नॉट मेजर टाइम। दिस वाज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सनडायल। चलो एक्यूरेसी भी आ गया, लेकिन क्या नहीं रहा कि रात को सन नहीं आएगा ना, तो तब टाइम मेजर करना हो तो ओके। सो फॉर दिस अब हम आते हैं हमारे वॉचेस वगैरह में। आज जो हम कौन से प्रिंसिपल को यूज करके टाइम मेजर कर रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम क्या है? टू एंड फ्रो कंटिन्यूअसली मूव करता है रेगुलर इंटरवल्स पे, है ना। हमें क्या चाहिए? टाइम मेजर करने के लिए ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो रेगुलर इंटरवल्स पे अगेन एंड अगेन एक साइकिल परफॉर्म करता हो। तो सिंपल पेंडुलम भी कुछ ऐसा करता है। डिटेल्स रिगार्डिंग विच वी वुड बी स्टडीइंग इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास। अभी हम लेक्चर को एंड इस तरह से करेंगे कि कुछ कॉमन यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम्स हम जो यूज करते हैं फॉर मेजरिंग टाइम इज, जैसे ये वाले जो है, दीज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 minutes is equal to 1 hour, okay, 24 hours is equal to 1 day, and 365 days or 366 days is equal to 1 year. Now the thing you have to remember is, ये तो याद है, ये तो आसान है, बट अगर यहाँ बात करें 10 years, तो 10 years के लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं, वो है 1 decade. 10 decades is equal to 1 century, which is equal to 100 years. 10 century is equal to 1 millennium, which is equal to 1000 years. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो है तुम्हारे राइट हैंड साइड जो है कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ टाइम, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले तो बहुत आसान है याद करना,
Okay, so this is all for today. Okay, in the next class we would be starting with simple pendulum.